In a big relief to the commuters and railway passengers, the Central Railways has announced reduction of train fares by 40 to 50%. We are in Srinagar's railway station and we are trying to understand how people are taking this big relief measure by the central government. This move aims to provide financial relief to daily commuters with prices for passenger trains dropping by approximately 40 to 50%. Previously, passengers had to pay the express fare for passenger train travels. The Indian Railways reinstated second-class ordinary fares on passenger trains, now designated as express specials or express trains, with effect from February 27. Following the COVID-19 pandemic lockdown, the railways phased out passenger trains and elevated the minimum ticket price from 10 to 30, aligning it with express train fares. Railway authorities notified Chief Booking Reservation Supervisors of the reversal, effective Tuesday morning. Railway authorities have decreased ordinary class fares by approximately 50% on all mainline electric multiple unit train and those designated with numbers starting with 0. Additionally, revisions were made to the fare structure in unreserved training system. This fare reduction applies to all trains previously categorized as passenger trains and now operating as express, special or MEMU train nationwide. मेरा नाम निसार अहमद भट्ट है। मैं बनिहाल से बिलोंग करता हूँ। हमने इंडियन रेलवे की आज बहुत अहमियत देखी। इसमें बहुत इजाफा कम हो गया टिकट में। जैसे हम बनिहाल से आए 60 रुपये किराया था श्रीनगर का, आज 30 रुपये के किराए पे हम यहाँ पहुँच सके। लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया, न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में इतनी महंगाई का ज़माना बढ़ते हुए लोगों के पास पैसे का बहुत मुश्किल होता है। और नौजवानों के लिए बहुत खुशखबरी है कि आने वाले टाइम में रेलवे की तरफ से बहुत खुशखबरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें दी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमने भी सुना है कि आने वाले टाइम में रेलवे पूरे हिंदुस्तान से कश्मीर के लिए चालू होगी। In Srinagar, we are joined by Station Master Sanjan Kumar Mandal. संजन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और थैंक यू जी, आपका भी शुक्रिया। और आज चूंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया जी जी जी, और श्रीनगर जो रेलवे स्टेशन है इस पे बहुत भीड़ भी रहती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पैसेंजर के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ की तादाद रहती है, सुबह से शाम तक तो बहुत ज़्यादा रहती है। और इसी सरकार का इस कदम से ना बहुत ज़्यादा पैसेंजर को, भारतीय नागरिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कोविड के बाद जो सरकार ने बढ़ाई थी ना ये टिकट में फेयर, तो उससे बहुत ज़्यादा जो निचले तबके के जो गरीब इंसान थे उसको थोड़ा सा टिकट में अब राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। सरकार के इस कदम से ना हम लोग बहुत खुश हैं, एम्प्लॉय भी और जो पैसेंजर भी बहुत खुश हैं। पैसेंजर में जो एक उमंग थी वो एक किराया को लेकर अचानक से उसे पता चला कि नहीं मेरा बनिहाल का टिकट अगर 50 रुपया है, उसको अचानक से 25 से 30 रुपया देना पड़ रहा है, तो उसे एक अचानक से खुशी मिल रही है उसे। हाँ, वो सडनली हम अचानक से देखने को मिल रहा है काउंटर पे, टिकट काउंटर पे। पूरा इंडिया के लिए तो ये बहुत खुशी की बात है इसमें। मे नाम मोहम्मद अब्बास, बस रोजान हाईगाम सोपोर, तो मैं गई 9 वरी खसान ये रेलवे, तो ये असल फायदे रेलवे मज खसन वसन गोड 10 रपये टिकट, तो बडगुम या श्रीनगर आशे गसन मज हां 10 रपये। और मे पावर सटित रेतस पे जनाब, तो बस खसान वसान श्रीनगर, तो आज कोन बे प्रेम पे वापस 10 रपये टिकट विकट षटान क्या ब्रो हवा 30 रपये सोच पता कम क्या हवा 30 रपये टिकट पे हेवान क्या लॉकडाउन क्या तमिच प्रॉब्लम मे पता कहें सर, तो वन चमो बे कर्म सह रिक्वेट वापस 10 रपये हेवान स्टॉप पर बे वापस। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं बारामूला से हूँ। मुझे हो गए 6-7 साल हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल फ़ायदा क्यों नहीं आएगा, बहुत फ़ायदा है। मैक्सिमम लोग इसी में सफ़र करते हैं कि आसान हो जाता है, हर एक को जॉब पे कहीं पे पहुंचना है आराम से पहुंच लेते हैं। जी जी सर, ये इससे हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। ये जो ये कम हुआ है फेयर, इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये निकाला है ये बहुत ही अच्छा है, लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हर एक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये।